Hello everyone, myself Dr. Arushi Dudeja. I'm an MD dermatologist and a hair transplant surgeon. So in my talk series today, we have a very special guest. So let me introduce you to her. So that's Dr. Kiranjeet Kaur with us. She's a very senior gynecologist. So welcome ma'am for the talk series today. It's a pleasure to have you with us. Hi Arushi. Hello ma'am. So today we are discussing on a very important topic जो काफ़ी लोगों को उसके बारे में अभी ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, and there are a lot of queries regarding it. So I'll hand it over to Dr. Kiranjeet ma'am and she'll help us in that. Please ma'am, over to you. So cervical cancer, as you just said, is also known as the cancer of the mouth of the uterus. या layman term में अगर हम कहना चाहें तो बच्चेदानी के मुंह का cancer is one of the most or the second most common cancers of women in the age group of 15 to 44 years in India. And 80% of these cervical cancers, are due to the HPV infection. HPV यानी human papilloma virus. Okay. So any woman can get cervical cancer, but there are certain women who come under the high risk group. जैसे जिन औरतों को HPV infection है, जिनकी sexual activity start हुई है early stage पे, women who have multiple sexual partners or have a partner who has multiple sexual partners. Okay. Even sexually transmitted disease अगर आपको कभी हुआ है या फिर आपने long term से contraceptive pills खा रहे हैं या जब आपकी immunity low होती है. Right. And for that matter, even smoking and alcohol use can lead to cervical cancer. Oh, so मतलब ये सारे factors ऐसे हैं कि मतलब they make you prone to that? Yes. Okay. Yes. So you become more at risk of developing cervical cancer. So as it is, any woman can have it, but only with these factors will put you at risk of developing cancer. मैम लेकिन पता कैसे चलता है that you have this? See, I know टेस्ट रहता है, सब है हर कैंसर के लिए कुछ ना कुछ, बट कोई वे है जिससे हमें बहुत पहले ही पता चल पाए कि हाँ ऐसा होने के चांसेस हैं? ओके, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि HPV इन्फेक्शन एक महिला को कैसे होता है. सो HPV का जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है वो किसी भी महिला को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है. राइट. तो जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये वायरस 2 साल के अंदर निकल जाता है. अच्छा, ओके. अगर ये इन्फेक्शन रह जाए, सपोज आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं या कोई भी हाई रिस्क आपका बिहेवियर है, तो उसमें ये इन्फेक्शन रह जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अबाउट 10 to 15 years, दिस HPV इन्फेक्शन कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर. राइट. सो जब किसी महिला को HPV इन्फेक्शन होता है या अर्ली सर्वाइकल कैंसर होता है, जनरली महिला को पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं होता. That's the thing, right. It's only in the advanced cervical cancer stages that the female will present with certain symptoms. अच्छा. Like bleeding जो कि periods के अलावा हो रही है, जिसको हम intermenstrual bleeding बोलते हैं, या फिर after intercourse or bleeding after menopause. Oh, okay. And at times the female may have a pain during intercourse or a very foul smelling vaginal discharge. She can present with all these things. Okay. So ma'am, it's basically कि anything abnormal, maybe it discharge, bleeding, कुछ भी अपने time से अलग है, तो हमें it's always better to get it checked, right? We shouldn't ignore it. Right. Okay. उसके अलावा मतलब is there any cure for it, to be very honest? Because see, cancer सुनते ही सब एक बार तो हो जाता है कि यार it's a big thing. See, definitely once you diagnose cervical cancer, there is a cure, but most importantly you need to prevent it. Right. It is one of those cancers which can be prevented and can be picked up at an early stage. Oh, okay. Okay, so there are 3 main things to prevention. One is, the foremost is that you start getting your pap smears done, जिनको हम layman term में पानी की जांच बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह से. Oh, okay. Okay. Right. So pap smear is something, as I told you, कि 10 से 15 साल लगते हैं उसको कैंसर में डेवलप होने में after HPV infection. So that time can be utilized wherein we can pick up any abnormal cells or precancerous cells. अच्छा. And can be treated early and effectively. किसी भी महिला को जो 21 साल से ऊपर है और सेक्सुअली एक्टिव है, उसको पैप स्मीयर्स हर 3 साल में ज़रूर कराना चाहिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए हर साल.
Okay, so मतलब as simple as एक smear भी मतलब can help us to know about absolutely, it. absolutely. And एक बड़ा आजकल हम काफ़ी सुनते हैं जैसे even to be honest I've also got it the cervical cancer vaccine के बारे में. Yeah. So मैम ये proper prevent कर लेता है या it's just क्या है इसके? No. So the second most important prevention strategy would be getting an HPV vaccination done. हाँ जी. है ना? तो HPV vaccine is a very safe and a effective वैक्सीन. Okay. राइट. ये वैक्सीन जो है आइडियल एज है 9 साल से 14 साल की लड़कियों को लगाए जाते हैं. 2 शॉट लगता है 6 महीने के अंतर पे. Okay. So ma'am, for example, if I got it done, just say what I remember is I got it done around 24 or 25 की age पे. So it's not helpful then? No, it is helpful. As a catch-up vaccination, it can be given between the age of 15 to 26 as well. Okay. Okay. In that case, you need to give 3 shots. Okay. Right. And it is also licensed up till the age of 45 years. But you need to consult your gynecologist before you get it done. So मतलब better है 30 से पहले लगे तो. Yeah. But अगर हम 30 के बाद best is to get your child vaccinated with HPV. And then one thing more I've got to know is कि that's a very fascinating thing. Boys should also get it done. Why? What is the reason? Yes. Even it is useful for boys also to get vaccinated. इंडिया में सिर्फ जो नॉनावेलेंट वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है फॉर बॉयज़. बॉयज़ में ये वैक्सीन जो है वो एनल कैंसर, पीनिस कैंसर एंड माउथ और थ्रोट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, जेनिटल वार्ड्स को प्रिवेंट करता है. सो इट इज़ good if you get your boys also vaccinated and the dose schedule remains the same. So ma'am, ये vaccines जो आपने बताई अलग-अलग टाइप के, so is it readily available? Yes, all are available in India. Okay. So, okay, that's a bit of information that we got from our expert doctor today. I'm so thankful to you, ma'am, for taking out time for us and giving such informative, telling us informative stuff about this. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure to have. Thank you, Arushi, for getting me here.